Okay. So last class में we done Ampere circuit law. Tell me closed integral B dot dl is equal to mu naught times of I inside. Right? So Ampere circuit law is a shortcut to find the magnetic field. And our intention क्या है? Wherever method I told you, wherever we want to find the magnetic field, first take the imaginary loop that passes through that point, and we have to give the loop direction either clockwise or anti-clockwise. Loop direction ke along only the dl vector will be there, and magnetic field, inside there is a current. By applying right hand thumb rule, we can get the magnetic field. Okay, so from this you can get the magnetic field shortcut. And applications we done. Application में Ampere circuit law में infinite wire we derived last class में. Infinite wire we derived, and we took a hollow cylindrical wire we done, and we derived outside, surface and inside. Same way here now we are doing for the second one, where it is a solid cylindrical wire. Current is uniformly distributed. Okay, so solid cylindrical wire, this cylindrical wire, current पूरा distribute है, completely distributed. I इसका रेडियस इज आर. ओके, एंड नेट करंट, टोटल करंट इज, नेट करंट इज आई. And since it is uniformly distributed, I will take the help of current density. Current density is current per unit area. याद है ना? Current density is current per unit area, ampere per meter square. And we are assuming complete cylinder में J is constant. मतलब per unit area में how much current is flowing. If I take small unit area, the I current will flow. Here unit area will take I will flow. J is constant. J is constant everywhere throughout the cylinder. A solid cylinder है, and this is long cylindrical only, infinite cylinders. That's why formula तो same आएगा, right? Mu naught by 4 pi into 2y by a. Formula will be same since it is acting like a infinite long wire only. उसमें भी hollow में भी आया ऐसे ही, same इसमें भी आएगा. By using Ampere circuit law, we are interested to calculate outside, surface and inside, and we'll draw the graph. Exam ऐसे देगा, क्वेश्चन देगा, they will give the graph, which are the following graph. मैं advanced question कर रहा हूँ अभी. उसमें they will ask the question, you have to by using Ampere circuit law only we have to find. चलो, no, copy. Now outside wire we are taking. This is a solid cylindrical wire. Center से axis से smaller distance में I want to find the magnetic field at that point. Okay, and radius is R, capital R. Current is flowing in each and every cross section. Okay, so for this first step, we are wherever we are finding the magnetic field, imaginary loop बना रहा हूँ that should passes through that point. Okay, then we are writing the formula. Closed integral B dot dl is equal to mu naught times of I inside. Okay, so to solve that one, simplified model we are drawing. Always we are drawing simplified model so that easy for us. मैं top view में से देखने से कैसा लगेगा? Current is coming here, 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 here. Everywhere current is coming towards you, right? So I will represent like this. I. So complete each and every cross section में current is coming, I current is flowing. Okay, and this is Ampere loop. Ampere loop, and इधर से R distance दूर में I want to find the magnetic field. Okay, first step we done. Second step में loop direction देने का. साथ ही कौन वीडियो? Loop direction देने का. Either clockwise or anti-clockwise. I am giving anti-clockwise loop direction. Second condition also done. Loop direction. Then magnetic field check करो. Thumb indicates the direction of current and curled fingers indicate the direction of magnetic field. So it is anti-clockwise. Magnetic field is, because I want B and DL ka relationship, then only I can find angle, right? B. Now DL will be along the loop direction only. Whatever we assume, the direction only loop direction. So loop direction में DL, 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 DL. खत्म. Now apply करो. Closed integral
बी डॉट डीएल, बी एंड डीएल के बीच में एंगल इज 0, बी डॉट डीएल, सो देयरफॉर फॉर्मूला क्या होगा, बी डीएल cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड। कितना करंट है टोटली इस एम्पेयर्स लूप में, इनसाइड टोटल करंट इज, नेट करंट इज आई ओनली, दैट्स व्हाई आई इनसाइड के जगह में आई लगा रहा हूं। सो बी इज कांस्टेंट एंड यू नो डीएल 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 पूरा डीएल मिल गया तो कितना होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल दैट इज 2 pi r is equal to mu naught I. Therefore, B is equal to mu naught by 2 pi into I by R. I am multiplying with dividing with 2 so that आपको फॉर्मूला मैच हो जाएगा, mu naught by 4 pi into I by R, which is the like formula for the infinite wire, infinite long cylindrical wire, right? Formula याद है ना, mu naught by 4 pi into 2 I by R. That means here from the your notation is B is inverse proportional to R. So outside में it is inverse relation. As we go away, क्या हो जाएगा, the magnetic field will decrease. Now ये outside है, surface में क्या होगा, smaller will become capital, just substitute smaller के जगह में capital, mu naught by 4 pi into I by capital, mu naught by 4 pi into I by capital. 2i Surface में भी आ गया, हाँ, it's 2i by capital, right? हाँ 2I by, हाँ 2I by capital. Okay, so inverse proportional to R, ये वाला रेडियस पर डिपेंड हो रहा है, सरफेस में इतना। नाउ केल पूरा इनसाइड ओनली, केल पूरा इनसाइड। ठीक है, डन। नो विल गो फॉर इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड वाला देखो, सिलेंड्रिकल के, सॉलिड सिलेंडर के अंदर में इनसाइड में आर डिस्टेंस दूर में आई वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। सो एम्पियर्स लूप को ऐसा अकॉर्डिंगली यू फॉर्म ए वन इमेजिनरी लूप दैट शुड पासेस थ्रू द पॉइंट पी। फर्स्ट वन स्टेप डन। एंड आपको सिंपलीफाइड मॉडल करने के लिए टॉप मॉडल, टॉप व्यू देखने का, टॉप व्यू में से लाइक द फर्स्ट फॉर्मूला, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड। ओके, टॉप व्यू में देख रहे हैं, टॉप व्यू में करंट इज कमिंग अपवर्ड्स पूरा टक बोल के आ रहा है ना, सो आई एम यूजिंग दिस वन। ओके, दिस इज टॉप व्यू एंड दिस इज ये पूरा करंट कैरिंग वायर साइड, टॉप व्यू में देखने से इधर से आर डिस्टेंस दूर में दिस इज एम्पियर लूप, एम्पियर लूप, राइट। So then second step is what? Apply the loop direction. Loop direction anti-clockwise I'm giving I and I. And you know right hand thumb rule के हिसाब से thumb indicate direction of current and curled fingers indicate direction of the magnetic field. Loop direction I नहीं है, loop direction is anti-clockwise direction. That's it. Okay. Now thumb indicates the direction of the magnetic field. So क्या होगा? Tell me. Magnetic field is anti-clockwise or clockwise? Anti-clockwise or clockwise? Magnetic field. Thumb indicate direction of current and curled fingers indicate the direction of magnetic field. Anti-clockwise or clockwise? Anti-clockwise. And DL should be taken along the loop direction. Now we'll apply the concept. Close integral B dot DL is equal to mu naught times of I inside is how much? इस लूप में अंदर में करंट कितना है, इस एम्पियर लूप के अंदर में करंट कितना है? J into A, but A is the area. Yes. So आपको करंट I तो पूरा करंट है, बट इधर I कॉल एज I डैश मान लो, इसमें करंट मान लो I डैश। I told you current density is same everywhere. So original current density क्या है? J is equal to current per unit area, area of the cross section कितना? Pi r square. This is original conductor का cross section area. And इसका, इस small loop का G dash I call I dash by pi r square. Right? Current density is same I told, right? Current density is same. Equate करो. I by pi r square is equal to I dash by pi r square. Pi cancel.
I dash is equal to I into R square by capital R square. Right? Now substitute this in this. I into small r square by capital R square. And it is same है B and DL का cos 0. B will be coming outside. A DL will get 2 pi R. So B times of 2 pi R is equal to mu naught I R square by R square. So R एक R cancel. B is equal to mu naught by 2 pi into I by capital R square times R. That means I can tell B is proportional to R. B is proportional to R inside. Right? See relationship find करने का. See इसमें formula remember करने की जरूरत नहीं है. Always method समझो. They can give any shape. You have to draw the ampere loop, BD और DL लगा के solve करने का. Current density same बोल के आपको idea आने का. Okay? So direct relation आ गया. देख R के साथ direct relation. So now graph कैसे रहेगा? कॉपी डा क्या बोला? Now graph कैसे रहेगा? कॉपी करो. Like this. देखो inside वाला B is proportional to R and outside is B is inverse proportional to R. So by seeing the graph, you should understand that it is a solid cylindrical shape wire. Now advanced question देने वाला हूँ. आप ही solve करके आंसर बोलो. Okay. So advanced question. Understand what which graph is matching बोल के बोलने का. A infinitely long hollow conducting cylinder with inner radius r by 2 and outer radius r carries a uniform current density along its length. So क्या बोला? This is a one cylinder is there, infinitely long cylinder is there, and there is a hollow cylindrical wire is there inside. Inside there is a hollow cylindrical wire. इसका radius is क्या है? इसका radius is आधा का इसका axis. ये radius is r by 2 and ये radius is r. And this is hollow. Inside वाला hollow है. But outside ये पूरा तो hollow नहीं है. Only cylindrical. R by 2 वाला only hollow. Remaining वाला पूरा भर के current will flow here, everywhere. The magnitude of magnetic field at a radial distance r मतलब as we go away from the wire, current carrying wire, what is the which graph will match? You have to know. Question understood? That means inside point, outside point, surface point पूरा find करके you which graph is matching you have to find. First inside find करो. B inside. B inside. Inside the hollow as well. हाँ inside ये hollow है. 0. हाँ. So इधर से मुझे r distance दूर में I want to find the magnetic field at this point. So closed integral B dot dl is equal to mu naught times of I inside. Since I inside, श्रीराम इसका इसमें करंट नहीं है, कुछ भी नहीं है. I inside is 0. I inside is 0. That's why B is 0. So which one is matching less than r by 2 में? मतलब I am telling r is less than r by 2. देखो which one is not there? Tell me. Less than r by 2 वाला. See less than r by 2 वाला 0 है. इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर 0 नहीं है. मतलब we can remove this option first. Less than r by 2 there is no 0. And now try to find outside point. इधर से r distance दूर में I want to find the magnetic field at this point P. Sir, is it C? You tell me first outside point बोलो, बाद में C बोलते हैं. Outside point find करो. So same imaginary loop बनाओ and try to apply Ampere Circuital Law. B dot dl is equal to mu naught times of I inside. Outside कितना है?
मतलब ऊपर से देखने से, टॉप व्यू का डायग्राम ड्रॉ करने से इसमें जाएगा, इसमें तो नहीं है। द करंट कैरिंग कॉइल इज लाइक दिस, राइट? इनसाइड तो हॉलो है, कुछ नहीं है। ओके, दिस इज एम्पियर लूप। इधर से आर डिस्टेंस। टेल मी व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी इन दिस आउटसाइड में? Outside both the cylinders are inside the. इनसाइड हॉलो है। ओके, Yeah. ओनली So दिस outside कनेक्ट। that, हाँ, आउटसाइड कितना है? outside that, it's proportional to R. प्रोपोर्शनल टू आर, वाई? So टेल मी because it's, so फर्स्ट are you लूप डायरेक्शन। asking inside the solid one, but outside the नो नो, hollow one? आउटसाइड, आउटसाइड बोले तो Okay, क्या है? outside hollow. दोनों की Okay. वजह से आउटसाइड। Okay. हाँ, कितना सब्जेक्ट आउटसाइड में? ये लूप डाला, फर्स्ट लूप डायरेक्शन इंडिकेट करो, एंटी It's क्लॉकवाइज। inversely proportional to R. Inverse proportional to R. Magnetic field, if you see, like this is there, B, B, B. Same method, अभी क्यों ना? So, and B, DL will be in the direction of the loop direction. So, B dot DL cos 0, B बाहर आ जाएगा. And DL will get the 2 pi R is equal to mu naught times of I inside. Total current is, inside is I on, right? So, therefore, B is equal to mu naught by 2 pi into I by R, which is inverse relation. B is inverse relation to R. So, which one is matching outside में? और greater than R वाला? Greater than R वाला, ये वाला भी मैच हो रहा है, ये वाला भी मैच हो रहा है, ये वाला भी इनवर्स रिलेशन जैसा। ओके, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द नाउ R/2 एंड R के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने का। फाइंड करो R/2 एंड R रिलेशनशिप। It'll be Then we can, proportional to R. why proportional to R? So because it's between R/2 and R, so that means it's an inside point of the solid cylinder, and outside point of the hollow cylinder. So, Then so if it's inside, so it will be directly proportional. no, first B फाइंड करो। B एक्सप्रेशन आ जाए चाहिए मुझे इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी में चाहिए। क्लियर अंडरस्टूड श्रीराम? आउटसाइड पॉइंट अंडरस्टूड। नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड इनसाइड पॉइंट। So according to which option is matching for you? Sunway. According to which match is matching now? Which option? Then we'll find expression. Okay. So now here we are taking the point. Okay, point P. Either say R distance or like in between, right? So R is greater than R/2, less than R. That only decided. R and R/2 के बीच में graph only it will decide it. Okay. Now apply करो, कैसा आएगा? Close integral B dot DL is equal to mu naught times of I inside. See, B dot DL वाला easy है. If you see the top view graph, कैसा रहेगा? It is इधर loop बना रहा हूँ ना. So connectors will be here only. And the loop is R distance दूर में, the point P है. And इसका radius is R/2. इसका radius is R, right? ये वाला R. Tell me. ये R/2 है, ये R है. So what will be the इसका mu naught dot B dot DL का कितना आएगा? मतलब we have I see I inside में there is I, I is not there, right? Inside में there is not I, right? So I dash मान लो. I dash मान के try to find, take the help of current density and solve. See हम top view में draw किया. Here wires are there, but inside there is no wires. So inside खाली है. ये distance from here to that R point is nothing but R लिया. ये वाला Ampere's loop तक R लिया. And this is R/2. This is R/2. ये जो भी है, this length इधर से इधर तक. This is R/2. Okay. Now how to find इसका current inside is I dash मान लो. Now take the help of current density. Current density formula क्या है? I by I dash by directly we'll try to find current density in terms of J में लिख देंगे. Okay. I by unit area. Area कितना होगा tell me? Area कितना है? This is R. This is R/2. I want this area. मतलब एक कनेक्टर का एरिया चाहिए. This area चाहिए. tell me. This area, only this area want. This area want. कैसा आएगा? समझ में आ रहा है? I'll draw. See हम समझो.
टॉप व्यू में देखा, टॉप व्यू में आई वांट दिस पॉइंट राइट, इधर पॉइंट में चाहिए ना, ये पॉइंट में चाहिए, देखो दिस पॉइंट में चाहिए, पॉइंट पी। सो मैं क्या करूंगा, आई विल ड्रॉ फ्रॉम द टॉप व्यू, टॉप व्यू में से देखने से करंट इज कमिंग फ्रॉम द कॉर्नर से ओनली, नॉट इन बिटवीन, हॉलो है ना बिटवीन, सो बीच में छोड़ के द करंट्स आर कमिंग लाइक दिस, राइट, ये वाला है। नाउ इसका रेडियस दिस इज समथिंग बट ये वाला, राइट, ये लीव कर दो, ये वाला हॉलो है। हाँ, नाउ टेल मी इसका रेडियस इज हाउ मच, ये रेडियस इज हाउ मच, दिस R एम्पियर by लूप, हाँ ये r/2, ये वाला एम्पियर लूप, and this is nothing but R, right? Now current per unit area means how to find a loop direction liya, same thing, magnetic field will be like this and dl vector will be along the loop direction, वो सब ओके है, ठीक है ये वाला। नाउ इसका करंट डेंसिटी फाइंड करेंगे, करंट पर यूनिट एरिया, एरिया कौन सा लेगा, आई वांट दिस एरिया ओनली, नॉट हॉलो का रिमूव करने का, ओके So कैसे है, pi r square minus pi capital R square by 4. so r square by 4, okay, from this I is equal to, I dash is equal to j times of pi by 4 times 4r square minus r square, right, I dash की जगह में। now substitute this in the expression of current density a b का, तो क्या होगा, a b dot dl क्या होगा, dl and b are in the same direction cos 0 and b will be coming outside and dl will become 2 pi r, so b times of 2 pi r is equal to mu naught times of I inside के जगह में j into pi by 4 times 4r square minus r square. Now if you see carefully, as r increases, ठीक है, ये क्या होगा, b is equal to from this this नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, mu naught j pi into 4r square minus r square by 8 pi r. Okay, as r increases, magnetic field will increase or decrease, tell me. ऊपर न्यूमेटर में r square is there, डिनोमिनेटर में r is there, मतलब न्यूमेटर में ज्यादा है ना, so it will increase, right, magnetic field increases, मतलब indirectly it is proportional to like r square वाला terms में, so मतलब whether straight line linear graph आएगा, non linear graph आएगा, tell me, in r/2 to r के बीच में, tell me which graph will get, linear graph आएगा, whether linear graph आएगा, because it is proportional to r square, right, r square terms में है, so it will not come linear graph, if it is proportional to r then only possible, so this is not possible, whether slope is 0 na, whether magnetic field is 0 here in between r/2 r में, in this expression में magnetic field is not 0, right, so ये भी नहीं है, so it is answer is D। समझ आया साथी, एडवांस क्वेश्चन टाइम में जल्दी में कहता हूँ, क्या तो गया हमसे, सो ये लीनियर, देखो ये लीनियर ग्राफ है, लीनियर ग्राफ कब आएगा, ओनली व्हेन b इज प्रोपोर्शनल टू r, ये आपको सम एक्सप्रेशन आ रहे हैं, सम r स्क्वायर आ रहा है, इफ आई सब्स्टिट्यूट रैंडम वैल्यूज आल्सो, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, लीनियर ग्राफ नहीं आएगा, सम कर्वेचर आएगा, ओके कर्वेचर, बट डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन इंक्रीज होगा, देखो इंक्रीज हो रहा है, एंड आउटसाइड तो इनवर्स रिलेशन, तो सोचना पड़ेगा, एडवांस में थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, इतना आसान नहीं है, एंड दिस यू ऑलरेडी सॉट, राइट, आउट ऑफ 300 में 100 आए तो भी IIT आ रहा है, आउट ऑफ 300 में 100 आए तो मतलब गेटिंग, मतलब आपको मेंस में आके लिखना इंपॉर्टेंट है, मेनी पीपल विल नॉट राइट आल्सो, सी दे आर टेकिंग 2.5 लाख पीपल क्वालिफाई कर रहे हैं, उसमें से दे आर राइटिंग ओनली 1 लाख पीपल ओनली, पीपल आर थिंकिंग व्हाई टू राइट, नहीं लिख रहे, दैट्स गुड ओनली, द पर्सन्स हु विल राइट इन दैट में आपको 100 आए तो 90 आए तो भी आपको IIT में मिल जाएगा, कोई भी IIT, बहुत सारा IIT सर देयर, इधर नहीं है तो थोड़ा दूर में जाएगा, बट IIT में मिल जाएगा, सो दैट्स व्हाई नेवर लीव मेंस में क्वालिफाई कर रहा हूँ, मेंस में क्वालिफिकेशन आने के लिए आपको मिनिमम, मतलब कट ऑफ तो इधर उधर होता जाएगा बेस्ड ऑन द पेपर, बट मिनिमम 92 93 परसेंटाइल, 91.1 इज द क्वालिफाइंग आ रहा है, बट 95 एबो आए तो सेफ जोन में रहेगा, आपको 95 एबो परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं है परसेंटाइल, ओके, I told right 190 आए तो भी you will get nearly 99.92 99.91 आ रहा है, 190 चेंज आ रहे तो, ओके, आउट ऑफ 300 में 190 चेंज आए तो भी एवरी ईयर ऑलमोस्ट 98 to 99 परसेंटाइल में मिल रहा है, ओके,
सो ट्राई टू गेट नाइसली अंडरस्टैंड एंड सॉल्व. सेकेंड ईयर अभी तक जो भी नोटबुक किया तो भी आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा. ओके चलो, नाउ विल गो फॉर द next shape. I told you which shape, that is solenoid. Magnetic field due to finite solenoid. Magnetic field due to finite solenoid. See, finite solenoid and infinite solenoid different है. Infinite means very, मतलब dimensions के साथ we can say infinite. See, suppose this is the radius r and this is the length l. If l is much greater than r, then we can say it is infinite. In ideal solenoid बोलते हैं. Ideal solenoid. मतलब बहुत लेंथी, बहुत बड़ा वाला. ये फाइनाइट है, इसमें डायमेंशन सेटिस्फाई नहीं हो तो फाइनाइट वायर बोलते हैं. फाइनाइट वायर का यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ वी हैव टू सॉल्व. ओके, बट वी विल डू गिव द डायरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द बायोट-सावर्ट लॉ. एम्पियर सर्किट लॉ यूज करके विल सॉल्व फॉर मैग्नेटिक फील्ड फॉर आइडियल सॉलिड. ओके चलो, सो इसका सॉलिड क्या है, फर्स्ट थोड़ा डेफिनेशन लर्न करेंगे. व्हाट इज सॉलिड? एन इंसुलेटेड वायर टाइटली वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स शेप. सीधा नहीं आएगा, थोड़ा बेंड होगा ऐसा, हेलिक्स शेप, स्प्रिंग जैसा. दैट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड. ओके, इट इज ऑब्जर्व दैट करंट कैरिंग हेलिक्स सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट. सो सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज बिहेव लाइक द मैग्नेट ओनली. सो देखो सोलेनॉइड इज लाइक दिस, स्प्रिंग जैसा. ओके, इफ आई पास ए करंट, इसका मैग्नेटिक फील्ड इज सिमिलर टू द दैट ऑफ बार मैग्नेट. ओके, देखो कैसा रहेगा. कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल द फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. राइट, राइट हैंड थंब रूल वी आर यूजिंग. राइट, टिल नाउ टोटल मैग्नेटिज्म में वी आर यूजिंग ओनली राइट हैंड थंब रूल ओनली. अभी तक मूविंग चार्जेस नहीं हुआ, मैग्नेटिज्म तक ओनली राइट हैंड थंब रूल. कर्ल द फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग लाइक दिस and going like this. Right, so it is coming like this, again it's coming and going like this. And so this is देखो the north pole and south pole is so I can compare with the magnet only. देखो north pole, south pole, magnetic field is like this. That's why current carrying solenoid is similar to that of bar magnet. उसका field will be similar to that of bar magnet. Inside there is a uniform magnetic field always. 10th class में सीखा. Inside there is a uniform magnetic field, and we saw the application also. Soft iron core को magnetize करने के लिए we use this one solenoid. Okay. Now here मान लो length है L. First we are seeing finite wire, finite solenoid का. Okay. इसका radius is R. And इसका total number of turns is n. This is total number of turns. Total number of turns. And small n is number of turns per unit length बोलते हैं. Small n expression क्या है? Number of turns per unit length. लिख लो बात. Number of turns per unit length. Per unit length. is nothing but small n. Okay, इसमें टर्मिनोलॉजी है. तो देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, आई शो यू. डन. ओके, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा रहेगा इन शॉर्ट फॉर्म में. देखो मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. हाँ, हियर अंडरस्टैंड करो. मैं क्या किया, इसको मैं फ्रंट पार्ट को काट दिया, दिस पार्ट को काट के निकाल दिया. स्प्रिंग को, स्प्रिंग इज ऐसे ऐसे है ना, स्प्रिंग इसमें आधा कट कर दिया, आधा कट करके निकाल दिया. इफ यू सी इन 2 डायमेंशन में करंट इज कमिंग आउटवर्ड्स एंड करंट इज गोइंग इनवर्ड्स. राइट, आउटवर्ड्स इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स इनवर्ड्स. राइट, उसमें मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा. देखो आउटवर्ड को डॉट एंड इनवर्ड को क्रॉस बन, ऐसे रिप्रेजेंट करने वाला है. आउटसाइड विल बी डॉट एंड इन करंट इज गोइंग इनवर्ड्स. राइट, इनवर्ड्स इज लाइक दिस. अगेन आउटसाइड डॉट एंड इनवर्ड क्रॉस, ऐसे रिप्रेजेंट करने वाला है मैग्नेटिक फील्ड को. सॉलिड में डेरिवेशन आल्सो वी विल डू, दे विल टेल डॉट एंड क्रॉस वाला ओनली दे विल शो. दैट मींस इट इज सॉलिड ओनली. राइट, नाउ हमारा इंटेंशन क्या है, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज देयर एट दिस पॉइंट P इन द मिडिल में और समवेयर में. मैग्नेटिक फील्ड कितना है, हाउ मच फार्मूला वी हैव टू यूज, वी हैव टू फाइंड.
Using Biot-Savart Law we are doing, but derivation we are not doing. We will write the expression and आगे infinite में Ampere circuit law use करके same expression will derive. Okay. Copy down. ओके जनरल होता है ना, इसको जरूरत नहीं है इतना. चलो नो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड. देखो डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट करने वाला है. डॉट एंड क्रॉस. ओके दिस आर रेडियसेस आर. रेडियसेस आर. आई वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी. तो एग्जैक्ट सेंटर नहीं है एक पॉइंट पी में. ओके डेरिवेशन नहीं कर रहे. वी आर ट्राइंग टू राइट द डायरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इन द फाइनाइट सोलेनॉइड. समझ में आ रहा है. फाइनाइट ही विल मेंशन क्वेश्चन में. फाइनाइट है तो फाइनाइट बोल के मेंशन करेगा. राइट. ओके नाउ मैं क्या करूंगा, इस ये एंडिंग पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट को एंड एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करूंगा. ओके आई कॉल दिस एज θ1 एक्स एक्सिस से. दिस एक्सिस राइट, एक्सिस से. एंड सेम इधर से इस पॉइंट को θ2. सेम ग्राउंड से एक्सिस से ओनली आई एम रिप्रेजेंटिंग θ2. ओके आई वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P. सो इन दैट केस में इसका रेडियस इज R. इन दैट केस में फॉर्मूला विल बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एट एक्सिस में म्यू नॉट Ni/2 into cos θ2 minus cos θ1. Cos θ2 minus cos θ1. This is the expression for a finite current carrying solenoid. So magnetic field at that point P by using Biot-Savart Law पूरा आपको number of turns करके find कर small dl element लेके solve किया तो we'll get this expression. B is equal to mu naught Ni/2 into cos θ2 minus cos θ1. लिखो expression important है. And where n is what here? N is number of turns per unit length. Number of turns per unit length. आपको लेंथ देगा, नंबर ऑफ टर्न्स देगा, डिवाइड करना पड़ेगा टू गेट स्मॉल n. तो फॉर्मूला भी लिख दिया है एंड फॉर्मूला शीट में भी है. फाइनाइट सोलेनॉइड का म्यू नॉट Ni/2 into cos θ2 minus cos θ1. एंड θ1 कैसे समझ में आ रहा है ना. θ1 स्टार्टिंग पॉइंट का θ1, एंडिंग पॉइंट का θ2. फ्रॉम दिस एक्सिस ओनली वी शुड टेक. ओके चलो नो करो. हाँ एक और क्वेश्चन. पर सोलेनॉइड, ए फाइनाइट सोलेनॉइड है. आई वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. is a finite current carrying solenoid. So 0. No. Here θ1 θ2 देख चेक करो डायग्राम के हिसाब से. θ1 and θ2. θ1 is 60. θ2 कितना है सात्विक? So 60 or 180 minus 20. 120. X axis से only that point we have to find. This is θ2. Completely okay. 120. No करो. Magnetic field. Cos 120 is minus 1/2. Minus mu naught Ni/2. Magnitude you can tell. Mu naught Ni/2. Magnitude is mu naught Ni/2. याद है? आ गया श्रीराम? mu naught Ni/2 into cos θ2 minus cos θ1. θ2 is 120 minus cos 60. किया तो आपको फॉर्मूला कैसा आएगा? मैग्नीट्यूड आई एम टॉकिंग अबाउट. mu naught Ni/2. This is a finite wire. Okay. Now, same thing will go for the infinite wire.
long ideal solenoid. Same expression में we'll using. Okay. Now try. Now this length is so large. कंटिन्यू होता जाएगा. Now tell me θ1 कितना होगा, θ2 कितना होगा? Anybody? ये इधर इधर होगा तो θ1 is here, ऐसा θ1. बट ये कंटिन्यू होता जा रहा है. The θ is decreasing or increasing? With respect to x-axis से θ is increasing or decreasing? Decreasing. Decreasing. कितना होगा लेंदी में फाइनली? θ1 is 0. 0. 0. Okay, θ1 is 0. θ2 बोलो. 180. θ2 will become 180 because देखो θ2 goes on increasing, right? ऐसा है तो goes on. Finally 180 हो जाएगा. तो substitute in the formula में and find magnetic field. Magnitude I want mu naught Ni by 2 into cos θ2 minus cos θ1. Cos 180 is -1 minus cos 0 is 1. So 2 get cancel. Magnitude कितना होगा? minus mu naught Ni by 2. Mu naught Ni, right? This is a formula. Yeah. This is a formula, very important formula. Whenever they don't mention solenoid means ideal solenoid only you should take. Okay. So mu naught Ni is a formula. Same expression, same formula will get in toroid also. Toroid also formula is same. Mu naught Ni. Very important. Mu naught Ni is a formula for ideal solenoid. We can use only for ideal solenoid. And देखो इधर भी mu naught Ni, इधर भी mu naught Ni, इधर भी mu naught Ni. So inside में axis में uniform magnetic field will be there. That's why everywhere mu naught Ni only formula. Okay. Now I want, हो गया कॉपी? Okay. Now at the end में बोलो, देखते हैं. Now I want same uniformly long wire में end में चाहिए, इस point में चाहिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड. θ1 कितना होगा, θ2 कितना होगा? end में चाहिए, इस point में. If I join this line, axis से कितना है? 90. So θ1 is 90. θ2 कितना है? 180. 180. Substitute करो in this expression में. Mu naught Ni by 2 into cos θ2 minus cos θ1. 180 is -1, cos 90 is 0. So minus, so magnitude कितना होगा? mu naught Ni by 2. देखो आधा हो गया. So you have to understand, in a ideal solenoid में inside everywhere same only. Ends में it will become half. mu naught Ni by 2 हो जाएगा. इस एंड में और इस एंड में दोनों में आपको mu naught Ni by 2 हो जाएगा. मतलब इन बिटवीन में पूरा कांस्टेंट है, बाद में डिक्रीज हो जाएगा. एम्पेयर सर्क्यूट लॉ में पीपल जनरली न्यूमेरिकल्स कम रहेगा, दैट्स व्हाई पीपल को आइडिया नहीं आएगा. ओनली दे नो इनफाइनाइट सर्कुलर सॉलिड का डायरेक्ट फार्मूला, बट एम्पेयर सर्क्यूट लॉ एप्लीकेशन सीखने का दैट दे विल गिव इन जेईई मेंस में क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा. लाइक वी डन सिलिंड्रिकल कैसा किया, ऐसा वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट एंड वी हैव टू सॉल्व. ओके चलो ग्राफ कैसा रहेगा देखो. इनसाइड में देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट है, दैट इज mu naught Ni वी गॉट. एंड एंड्स में क्या होगा, इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग लिटिल बिट एंड mu naught Ni by 2 रहेगा. एंड में mu naught Ni by 2 सडन डिक्रीज नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा गैप देके सर डिक्रीज होगा. इस पॉइंट में mu naught Ni by 2. हो गया.
See, November तक I want to finish the portion. November first week only. First only. आपको फर्स्ट वीक में. सो नवंबर दिसंबर कंप्लीटली पेपर से करने का, नहीं तो नहीं होगा. नवंबर इज मतलब आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, थ्री मंथ्स 1 वीक इज दैट्स इट. 3 मंथ्स 1 वीक में वी हैव टू फिनिश द पोर्शन. आपको कितना फास्ट में जाने का, बिकॉज लास्ट आई टोल्ड राइट, लास्ट 5-6 चैप्टर्स आर 1 मंथ में हो जाएगा. So now the target is you have to finish reoptics is the one major one, bigger one. Reoptics हो गया तो remaining chapters are easy. करके थोड़ा ज्यादा करके also we'll try to finish, no problem. Okay, हो गया covered. Now magnetic field due to ideal solenoid by using Ampere circuit law we will solve. Ampere circuit law से use करके we will solve. And here understand, for a straight long ideal solenoid which is L is much greater than R, that is called ideal solenoid. मतलब आपको देखने से also you can tell, they'll give length in the question में, R also they'll give in millimeters, 0.1 millimeters, ये वाला 5 meters बोलेगा. That means L is much greater than R, that is ideal solenoid बोल के, by seeing only you understand. Okay, outside magnetic field of ideal solenoid is 0, that one you have to understand. So if I draw, देखो if I draw, ये डॉट है, ये वाला क्रॉस है. ओके, डॉट है, क्रॉस है. नाउ इधर रेडियस इज आर. आई वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. इफ पॉइंट में देखो, अप्लाई करो, ट्राई करो, आपको आइडिया आ जाएगा. इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड विच डायरेक्शन इज देयर, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो. इस आउटसाइड करंट इज कमिंग आउटवर्ड्स, विच डायरेक्शन, देखो थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, बिकॉज ऐसा आ रहा है ना, एंड जा रहे हैं जाके ऐसा आ रहा है. So thumb indicate direction of current and curled fingers indicate the direction of magnetic field. So it is like this. B1. इसके वजह से magnetic field. देखो thumb indicate direction of current is like opposite direction. So net magnetic field, even though आपको लगेगा दूर है, magnetic field कम है, ऐसा नहीं है. Ideal solenoid में R is very less नजदीक में. At that time magnetic field is almost same. So finally it is 0 outside. Outside नहीं है magnetic field. And here also if I take Q point also, इसके वजह से it is like this and like this cancel out each other. So magnetic field at this point is also 0. So that's why outside में, ideal solenoid में, outside में there is no magnetic field. Only magnetic field will be there in inside only. Okay, that one you have to understand. So इसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाला है. एम्पेयर सर्क्यूट लॉ डेरिवेशन करके देन टोरॉइड आल्सो विल ट्राई टू फिनिश नेक्स्ट क्लास में.